हाँ बेटा लेटेंट हीट भी है प्रॉब्लम। चलो फर्स्ट हेडिंग चेंज ऑफ हीट और चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या मतलब क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं बेटा। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of converting a substance from one state to other state without change of temperature। ठीक है, so what is the change of state beta? It is the process of converting a substance from one state to your other state without change of your temperature, like 0 degree centigrade of ice to your water at 0 degree centigrade. There is no change in the temperature, but there, there is a change from your solid to your liquid, is called as of your change of your state. Is it clear for everyone? Is it clear बेटा? जैसा मान के चलो मेरे पास एक सॉलिड है, अगर सॉलिड को अपन मेल्ट करते हैं, इफ इट इज अंडरगोइंग मेल्टिंग, इट विल चेंज इनटू योर व्हाट? लिक्विड। लिक्विड को अगर हम लोग बॉईल करते हैं, ऑन बॉइलिंग इट विल गेट कन्वर्ट इनटू योर व्हाट बेटा? गैस। अब उसका उल्टा देखो बेटा, अगर लिक्विड को अगर हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, अगर हम लोग लिक्विड इसको फ्रीजिंग करते हैं तो दैट विल बिकम इनटू योर सॉलिड। अगर बॉइल गैस को हम लोग कंडेंसिएशन करते हैं, कंडेंसिएशन, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू योर लिक्विड। ठीक है, अगर कोई लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन रही है, सॉलिड से गैस बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर होरफॉस्ट। That is called as of an hoarfrost. If any liquid is directly converting from your solid to your liquid, और मान के चलो if it is converting from your gas to your solid, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sublimation। दो पॉइंट्स बस याद रख लो, थियोरेटिकल पॉइंट्स है, हाँ केमिस्ट्री में भी आया ही होगा बेसिकली। So that is called as of a change of state beta. So it is a process of converting a substance from one state to another state without change in the temperature. Example देख लीजिए, converting ice at 0 degree centigrade to water at 0 degree centigrade. It is converting from ice to water, but temperature is remaining for me the same. Or converting steam at 100 degree centigrade to water at 100 degree centigrade. Temperature is remaining same, but steam is getting converted to your water, और यहाँ पर ice is been getting converted into your water. There is change in the state, but temperature is remaining for me the same. Clear है सभी को? सर प्लीज ये रिकॉर्डिंग कैलोरीमेट्री के मैम को सेंड करिए ना। हाँ बेटा कर देता हूँ बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी बेटा, हाँ ये मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली?
एरो मार्क कन्वर्ट करता हूँ मैं, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं था, सर्दी हो गई मुझे पता नहीं। हाँ, सॉलिड से अगर लिक्विड को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट, सब्लिमेशन इज व्हाट बेटा, ट्रांसलेशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, सब्लिमेशन। इज इट क्लियर बेटा? उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है बेटा? डीसब्लिमेशन। और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट कॉइल। ठीक है, हाँ, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, करेक्ट। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट वन बेटा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसको बोलते हैं बेटा? इन ग्रीक लैंग्वेज लेटेंट मींस हिडन, the energy which has been hidden in a body is called as of your latent heat. So it is amount of heat required, amount of heat required to convert 1 gram of substance from one state to other state, one state to other state at constant temperature, at constant temperature is called latent heat, is called what beta? Latent heat. Is it clear? Amount of heat required to convert 1 gram of your substance, 1 gram of your substance to your 1 gram of your substance, amount of your heat required to convert 1 gram of substance from one state to your other state at constant temperature is called as of your latent heat. Clear beta? So that energy is delta Q is equals to M into your latent heat L. So L is equals to, I can write as of your Q divided by your M, or delta Q divided by M, वैसा भी लिख सकते हो, कोई problem. Amount of heat required to convert 1 gram of a substance from one state to your other state at a constant temperature is called as of your latent heat, or Q is equals to your M into your L, or Q is equals to your M into your L. यहाँ पर दो terminologies याद रख लेना बेटा. Make a small note here. Latent heat of your ice is equals to, और latent heat of your fusion भी बोलते हैं LF, that is 80 calorie per gram, या अगर केजीस में लिख रहे हैं तो 6 किलो जॉल पर मोल, या 336 किलो जॉल पर योर केजी, पर योर केजी. अगर हम लोग इसको अगर जॉल पर केजी में लिख रहे हैं, खाली जॉल पर योर केजी, किलो जॉल्स ना लिख के अगर जॉल पर केजी लिख रहे हैं, तो कन्वर्ट कैसा कर रहे हैं बेटा? कैलोरी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4200, isn't it? That is latent heat of your ice is equals to, मेरे पास कितना था? 80 कैलोरी पर ग्राम ना, तो उसको करके आ रहे हैं हम लोग 80 into your 42,000 or 4,200 joule per your kg कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ही we are getting the value of this one 336. Clear for everyone? Is that clear? Okay, ये वैल्यू सबने याद रखना है. Latent heat of your ice is equals to 80 calorie per gram or 6 kilojoule per your mole particulation. Clear? उसी तरह से नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये तो फर्स्ट वन हो गया. नेक्स्ट वन, latent heat of your steam, also called as latent heat of vaporization, represented by LV, that is equals to 540 calorie per your gram, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 540 into your 4200 joule per kg. जो कैलकुलेट हो रहा है वो डाल के लिख लीजिए, that will give me the answer. यानी approximately this will come for me 2260 kilojoule per your kg लिख सकते हैं, या this can also be converted into your kilojoule per mole, तो approximately आता है वो 40.8 kilojoule per your mole. ठीक है ना? Very important one. Next one, specific heat of your ice.
specific heat of your ice and steam, दोनों के लिए सेम है बेटा, that is equals to 1/2. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ योर वाटर कितना होता है? 1. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल हाउ मच फॉर मी? 1 पार्ट ऑफ रिलेशन. याद है ना सभी को? यूनिट क्या है बेटा? 1 मतलब क्या? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाउ मच फॉर मी बेटा? हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2100 जॉल पर kg degree centigrade, isn't it? Specific heat of water will be equal to how much for me? 4200 joule per kg degree centigrade, depending upon the conditions or conversion factors. ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. Conversions याद रखना है अपने को. Latent heat of your steam is 540 and latent heat of ice is equals to 80 calorie per gram. और conversions मैंने आप लोगों को डिटेल में बता भी दिया था कैसा करना है. That values you need to remember. Okay. Specific heat of a substance is independent of what beta? Mass of your body and the substance, because S is equals to delta Q by U. It depends upon what beta? Nature of the substance बोला था मैंने, and also it depends upon the state of your amount. Okay. थोड़े पॉइंट्स लिख लो. Specific heat of substance is independent of mass of substance and temperature difference. Specific heat depends on what beta? Specific heat depends on nature of substance. Starting में भी बोला था मैंने, depends upon your nature of substance and state of substance. Solid है, liquid है, gas है, उस पर भी depend करता है basically. Okay, so I can say that mercury has the least among the liquids. Mercury has least specific heat. So it is used in the clinical thermometers. That is the reason it is used in the clinical thermometer. And specific heat of water, specific heat of your water is greatest. So it is used in nuclear reactors. Nuclear reactors as moderators. ठीक है, ये आप न्यूक्लियर के फिजिक्स में पढ़ोगे. So specific heat of water is greatest. That is the reason it is used in the nuclear reactor as of your moderators. ये थोड़े थियरी पॉइंट्स है, ये आप लोग को याद रखना है बेसिकली. ठीक है ना? ये कन्वर्शन क्लियर है सभी को? Any doubt in this one? Clear है? Heat observed or heat evolved during the change in state is given by what formula beta? Delta Q is equals to your M into your L. either observe हो या evolve हो रहा है, तो Q is equals to M into your L लेंगे हम. Clear है for everyone? Is it clear? Any doubt in this one to anyone? Sure. Sure. Next heading लिख लो बेटा. Journey of ice. Journey of ice. Latent heat of water नहीं बेटा, steam है वो. Latent heat of water नहीं होता, latent heat of steam है. क्या लिखा है मैंने? Latent heat of steam ही लिखा है ना? हाँ, तो latent heat of steam लिखा है. Latent heat of steam. Steam different होता है, state different है ना बेटा? Journey of ice देखो बेटा. मान के चलो, I'm having ice at minus 10 degrees centigrade. Ice at minus 10 degrees centigrade will get convert into ice at 0 degree centigrade. ठीक है?
ice at 0 degree centigrade will convert into water at 0 degree centigrade. It will get convert into water at your 0 degree centigrade. Then water at 0 degree centigrade will convert into water at 100 degree centigrade. और अगर हम लोग हीट दें तो this water at 100 degree centigrade will convert into steam at your 100 degree centigrade. This is the journey of your ice. Okay, so from ice to ice there is change in temperature. So energy released is m into s into temperature difference. Change in state is there is no change in state. Then ice to water, there is a change in state. So here it will be Q2, constant temperature. So M into latent heat of your ice will be using here. Water and water, there is no change in the state, but water is being converting at 0 to higher. That means here Q3 will be equal to MS into temperature difference to delta T. Then here water is converting into steam. There is a change in the state, but temperature is remaining same. So here it will be Q4. Q4 is equals to M into latent heat of your steam लिखो या vapor लिखो, one and the same. ठीक है ना बेटा? Specific heat of the substance is independent of mass of substance and delta T. Specific heat depends on the nature of the substance and state of your substance. Mercury has the least specific heat. That is the reason it is used in the clinical thermometer. And specific heat of water is the greatest. That is the reason it is used in the nuclear reactors and as well as of your moderators. ठीक है? Journey of ice में देखो. Ice at minus 0 degree, minus 10 degree centigrade is being converting into ice at 0 degree centigrade. Ice at 0 degree centigrade will convert into water at 0 degree centigrade. Water at 0 degree centigrade will convert into water at 100 degree centigrade. And water at 100 degree centigrade will convert into your steam at your 100 degree centigrade. ठीक है ना बेटा? So I can write here. Total heat will be equal to how much at a time? So Q will be equal to your Q1 plus of your Q2 plus of your Q3 plus of your Q4. By using this equation, we can simplify the numericals. बस समझ में है बेटा? When there is no change in state, beta, this is your ice at 10 degree centigrade, ice at your 0 degree centigrade. The next one is water at your 0 degree centigrade, water at your 100 degree centigrade. Then finally, steam at your 100 degree centigrade. Clear बेटा? एक प्रॉब्लम करा दो, क्लैरिटी आ गई? चलो क्वेश्चन देखो एक बार. मान के चलो मेरे पास 10 ग्राम ऑफ आइस at minus 20 degree centigrade is converted into steam at 140 degree centigrade. Amount of heat required is चलो बताओ जल्दी से. 10 gram of your ice, 10 gram of your ice at minus 20 degree centigrade will convert into 10 gram of your ice at 0 degree centigrade. Isn't it? Then 10 gram of ice at 0 degree centigrade will convert into 10 gram of water at 0 degree centigrade. Then 10 gram of water at 0 degree centigrade will convert into 10 gram of water at 100 degree centigrade. Then 10 gram of water at 100 degree centigrade will convert into 10 gram of water, 10 gram of steam. 10 gram of steam at 100 degree centigrade. ऐसे ही होगा ना बेटा? तो यहाँ पर Q1 कितना हो जाएगा? MS into delta T होगा. यहाँ पर Q2 is equals to M into latent heat of ice होगा. यहाँ पर Q3 is equals to MS into delta T होगा फिर से.
एंड यहाँ पर Q4 इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होगा। तो Q1 की वैल्यू बताओ जल्दी से, यहीं कर देता हूँ बासित बेटा। Q1 इज इक्वल, मास कितना दे रखा है बेटा 10 ग्राम्स, 10 स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस, दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस, दैट इज 1/2, दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है बेटा 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 10, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 100 कैलोरीज आएगा। m इंटू एल ऑफ योर आइस कितना आ जाएगा बेटा 10 ग्राम से, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज नथिंग बट 80, तो यहाँ पर कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 80 800 कैलोरीज। यहाँ पर 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू टेम्परेचर इज योर 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड करेगा। Q4 इज इक्वल्स टू 10, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540, तो ये बन जाएगा 5400 कैलोरीज, इतनी एनर्जी यहाँ पर होगी। तो नेट एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा Q4, why we are not taking, sir, at Q4 why we are not taking L of water, L of water क्यों होगा बेटा, water is converting into steam ना, जो change हो रहा है उसको ही लेंगे ना, latent heat of your water नहीं लेंगे हम लोग, latent जो final stage का steam होता है ना, because we are having only the latent heat of your steam or latent heat of your ice, ठीक है। then total energy क्या हो जाएगी, Q is equals to your Q1 plus of your Q2 plus of your Q3 plus of your Q4। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 800, प्लस ये हो गया मेरे पास 1000, प्लस ये हो गया 5400, तो कितना है बेटा 5400 प्लस 100 5500, 6500 प्लस 800 यानी 7500 कैलोरीज, इतनी एनर्जी चाहिए मुझे। 7300 आ रहा, 5 6 7 बराबर ही ना बेटा, 7300 आ रहा। देखो एक बार कैलकुलेशन, am I going wrong anywhere? अच्छा 7300 आ रहा, चलो yeah 7300 calories, 100 plus 800 plus 1000 calorie plus 5400 calories, clear है? Is it clear? Any doubt in this one to anyone? Clear है? चलो और एक क्वेश्चन करें इस पे, ऐसे बोला ही, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए। 10 grams of ice at 40 degrees centigrade is converted into steam at 220 degrees centigrade. Heat required is how much? बताओ जल्दी से, कितने जने बताएंगे? 10 gram of ice at 40 degrees centigrade is converted into steam at 220 degrees centigrade. Heat required is equals to how much? चलो ट्राई करो आप लोग, 2 मिनट का टाइम ले लो। मैं कर रहा हूँ, डोंट लिसन टू मी, आप अपनी तरफ से कर लीजिए। फर्स्टली आई एम हैविंग 10 ग्राम ऑफ आइस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 नहीं बेटा, ये -40 है, सॉरी नहीं आता नहीं, तो दिस इज -40, सॉरी -40। 10 gram of ice at -40 degree centigrade is converted into steam at your 220 degree centigrade. Please try to recorrect it. 10 gram of ice at -40 degree centigrade. -40 degree centigrade. 10 gram of your ice at your -40 degree centigrade will get convert into 10 gram of your ice at 0 degree centigrade. Then this 10 gram of ice at 0 degree centigrade will convert into 10 gram of water at 0 degree centigrade.
10 gram of water at 0 degree centigrade will convert into 10 gram of water at 100 degrees centigrade, and 10 gram of water at 100 degrees centigrade is getting converted into steam 10 gram of steam at 100 degrees centigrade. Now 10 gram of steam at 100 degrees centigrade is converting into 10 gram of your steam at your 220 degrees centigrade. Sure, these are the stages you need to remember. यहाँ पर हो गया Q1 is equals to M into specific heat of your ice into delta T. Q2 is equals to M into latent heat of your ice. Q3 is equals to M into latent heat of water into a temperature difference. This is Q4 is equals to M into latent heat of your steam. And Q5 is equals to, there is change in temperature, M into specific heat of your steam लेंगे हम लोग यहाँ पर. This will be equal to your steam into your temperature difference, delta T. 7400 आ रहा है. चलो चेक करते हैं एक बार. Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q1 की वैल्यू आ गई 10 into specific heat of water, ice is half into temperature difference is 40. 2 1s are 2 2s are. ये कितना बन जाएगा? 10 into 2, this will be equal to 200 calories. Q2 will be equal to 10 into your 80, यानी ये हो गया 800 calories. Q3 will be equal to your, Q3 will be equal to mass कितना है? 10 into specific heat of water will be equal to how much बेटा? Specific heat of water कितना हो जाएगा? 1 into temperature difference कितना होगा बेटा? 100. तो ये बन गया मेरे पास 1000 calories. Q4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? Q4 की वैल्यू हो जाएगी 10 into specific heat of the steam is 540. So this one is 5400 calories. Here mass is 10. Specific heat of the steam is how much for me beta? Half. Into temperature difference will be equal to how much beta? 220 से 100. That is nothing but this will become for me 120. है कि नहीं? Higher temperature कितना है यहाँ पर? Higher temperature 220. 220 minus 100. So that will be equal to 120. So 2 1s are 2 6 are 12. ये 60. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये 600 बन जाएगा. ये हो गया 600 calories. सब टोटल एनर्जी देखो बेटा, कैलकुलेट करो. Q is equals to your Q1 plus of your Q2 plus of your Q3 plus Q4 plus Q5. Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 आया, प्लस नेक्स्ट वन इज 800 आया, प्लस नेक्स्ट वन इज योर 1000, प्लस नेक्स्ट वन इज 5400, प्लस इसके साथ कितना है अभी 600. तो कितना आ रहा देखो जल्दी से, 8000 प्लस 7000 चेंज कोई बोला था, तो Q की वैल्यू आ गई 8000 कैलोरीज. मेरे ख्याल से आपने मिस्टेक यहाँ किया होगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की जगह आपने लेटेंट हीट ऑफ वाटर ले लिया होगा, isn't it? That is the reason. So question number 5 I didn't get it. Q number 5. हाँ, Q में 5 क्या होता है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर है ना, MSCD डेल्टा T लोगे. स्टीम है ना, वाटर तो नहीं है वहां पर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर थोड़ी लोगे. स्टीम है ना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम लेना है. क्लियर है? क्लियर है तहसीन? तहसीन क्लियर है? चलो वेरी गुड. आ गया बात समझ में सभी को? ये सिंपल वाले क्वेश्चन से क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो. मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस. Mixing in different phases. Mixing in different phases. ठीक है? See, whenever we do such problems, we should get answer in between
0 degree centigrade to 100 degree centigrade. Okay, if answer is below 0 degree centigrade or above 100 degree centigrade, then the complete mixture is not mixed. So either ice may be in water, or steam may be in water. ठीक है ना? कभी कभी आपको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, मान के चलो आपने कभी कहीं मूवी देखने गया पीवीआर में या कोई भी मॉल्स में अगर में खाने गए होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में एक अच्छा सा कूल ड्रिंक में अगर आप 4, 5, 6 आइस क्यूब्स डाल दो, तो ऐसा होता है कि आपने पूरा का पूरा जो आइस है ना, इट विल नॉट गेट कन्वर्ट इनटू योर वाटर और इट विल नॉट मेल्ट इन दैट कूल ड्रिंक, क्योंकि ऑलरेडी कूल ड्रिंक का एक हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर होता है, उसके अंदर जब आइस डालते हो ना तो पूरा का पूरा आइस नहीं पिघल जाता, isn't it? तो even though you are completing your complete cool drink, आइस वैसे ही फिर भी थोड़ा सा वाला आइस बच जाता है बेसिकली। तो वैसे वाले में आंसर जो है ना, आपका आंसर कभी भी माइनस में ही होगा, क्योंकि आपके पास अभी आइस है तो ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगा, तो आइस कभी भी आपको नेगेटिव्स में ही एग्जिस्ट करता है, तो जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, या एग्जैक्टली जीरो हो सकता है, -1, -2 या एग्जैक्टली जीरो हो सकता है, बट नॉट अबाउट द जीरो, ठीक है ना? तो वैसे वाले कंडीशंस जनरली मिक्सिंग के कभी भी हम लोग, हाँ, तो मैं कभी भी मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेटा, हम लोग याद रख लेना है कि whenever we do such problems we should get the answer in between what beta 0 degree to 100 degree centigrade, ठीक है ना? If answer is below 0 degree centigrade or above 100 degree centigrade, then the complete mixture is not mixed. So either ice may be in water or steam may be in the water. ये बात अपने को समझना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अपने को आंसर कहां से कहां तक आना चाहिए, 0 से लेके 100 तक आया मतलब अपना आंसर करेक्ट है, 0 के ऊपर आया या 0 के नीचे आया तो 100 के ऊपर आया या 0 के नीचे आया तो सम आइस और सम स्टीम माइट भी आया, मतलब उसका कंडीशन, ठीक है ना? चलो आगे एग्जांपल दे लेता हूं, इसके बाद आप लोग को और बेटर में चले जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो बेटा, मान के चलो मेरे पास 4 ग्राम ऑफ योर आइस है, 4 ग्राम of your ice at 0 degree centigrade. Okay, it is mixed मतलब प्लस लिख रहा हूँ, it is mixed with 1 gram of your steam, 1 gram of your steam at your 100 degree centigrade पे मैंने मिक्स किया। Find final temperature, find final temperature of the mixture, find the final temperature of the mixture। चलो बताओ जल्दी से। 4 gram of ice at 0 degree centigrade plus 1 gram of steam at 100 degree centigrade is been mixed. Find the final temperature of the mixture. Use the principle of calorimetry, beta. Use the principle of calorimeter. Heat lost must be equal to heat gain. ठीक है ना? तो कौन हीट लॉस करेगा बेटा, जल्दी बताओ। जब ये मिक्स कर रहे हो आप 4 gram of ice at 0 degree centigrade and 1 gram of steam at 100 degree centigrade, then what is happening beta? एक कॉमन टेम्परेचर आएगा ना बेटा, 4 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो जाएगा और 0 से लेके 1, 2, 3 होके कुछ टेम्परेचर पे आएगा, स्टीम भी 100 से 99, 98 और कुछ होके कॉमन टेम्परेचर आएगा, isn't it? So I can say that let the system comes to a common temperature, of capital T मान के चल। ओके, लॉस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है बेटा? स्टीम लूजेस एंड आई कैन से दैट आइस गेन्स। बात समझ में आई? स्टीम लूज करेगा और आइस गेन करेगा, इसके हिसाब से आप अपनी इक्वेशन लिख लो बस।
सो स्टीम के लिए अगर लिख रहा हूँ तो कितना 1 ग्राम ऑफ स्टीम इंटू 540 will convert into water. One specific heat of water is 1 into temperature is 100 into some common temperature. Then 4 grams of ice at your ice matlab 80 plus this will become for me 4 specific heat of water is 1 into common temperature T minus 0 higher temperature minus lower temperature. तो ये आ गया 540 प्लस ये हो गया कितना 100 माइनस सम कॉमन टेम्परेचर T is equals to 4 8 280 48 8 25 280 बराबर प्लस दिस विल बिकम फॉर मी 40. ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा. दिस इज योर 540 प्लस दिस इज योर 100 माइनस T, isn't it? यानी अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो 440 माइनस ऑफ योर 280 इज इक्वल्स टू 40 माइनस ऑफ योर 100 माइनस ऑफ योर T. ये कर लोगे ना आप लोग. 540 माइनस 280 कितना होता है बेटा? सॉरी 540 माइनस 280. हाँ आया किसी को आंसर? 1 ग्राम 260. हाँ दिस वन विल बी इक्वल टू 260 that is equals to 4T minus this one is 100 plus T आ जाएगा. यानी ये हो गया 260 is equals to 5T minus 100. तो 260 इधर आ जाएगा तो प्लस 100 that is equals to 5T. तो कितना आ जाएगा बेटा? This will become for me 360 is equals to 5T. ठीक है ना? So T निकाल. कैलकुलेशन करेक्ट कर रहा हूँ क्या देख लो एक बार. टू 260 प्लस 100 ये हो गया 360 बराबर ही लिखा ना. कहीं गलत किया मैंने. 4 इंटू सॉरी 320 नहीं सॉरी ये वाला कहाँ गया यार. Yeah, this one is 320. बोलते नहीं थे. तो 540 प्लस ये कितना है 100 माइनस ऑफ T. तो ये कितना था 320 ना. ये हो गया 320. कहाँ किया मैंने 100 माइनस T इज इक्वल्स टू 40. क्या हो गया यार कंफ्यूज हो रहा हूँ. ठीक है मैं फिर एक बार कर दिया. यहाँ तक बराबर लिखा ना 540 इंटू 10T 324 इंटू T. हाँ ये बराबर हो गया. तो ये हो गया 540 तो ये हो गया माइनस 320 इज इक्वल्स टू 4T प्लस ये हो गया 100 माइनस ऑफ T. ले लेना बेटा. यहाँ तक क्लियर है सभी को. तो ये कितना आ रहा है बेटा 220 आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4T प्लस ये क्या था प्लस 100 माइनस T बराबर है ना. 100 माइनस T बराबर है. तो 220 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 40 माइनस T दैट इज इक्वल्स टू 3T. तो कितना आ जाएगा 120. 120 इज इक्वल्स टू 3T है कि नहीं. अच्छा 40 नहीं कैलकुलेशन में करेक्ट कर रहा हूँ कहीं मिस्टेक डाला है. देखो हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू शायद कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन. ये देख लो आप लोग सभी लोग एक बार मेरा कैलकुलेशन छोड़ो आप लोग अपनी तरफ से करके देखो एक बार क्या आ रहा. ये बराबर है लिखा ना मैंने. हीट लॉस मतलब फर्स्ट इट विल कम फ्रॉम द स्टीम टू वाटर 1 into 540 1 into 100 minus T बराबर आइस विल कम फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू सम कॉमन टेम्परेचर. तो बराबर लिखा. ये हो गया मेरे पास 540 प्लस ये हो गया 100 माइनस ऑफ T. ये भी बराबर है दैट इज इक्वल्स टू
ये कितना है बेटा 4 into your 8 that means this will be equal to 320 plus this one is your 40. तो ये हो गया 540 माइनस ऑफ योर 320 इज इक्वल्स टू 40. ये प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बी योर 100 माइनस ऑफ योर टी, isn't it? So this will be equal to how much beta? 220 बराबर ये. So it is your 40 minus 100. This will become for मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो प्लस बन जाएगा. तो ये बन जाएगा 220 माइनस मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 100 एंड दिस विल बिकम फॉर मी 5t. दैट मीन्स दिस इज 320 इज इक्वल्स टू योर 5t. बराबर है यहाँ तक? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है देख लो एक बार. बराबर बराबर बराबर. ओके t इज इक्वल्स टू कितना आएगा 320 डिवाइडेड बाय 5. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 64 डिग्री सेंटीग्रेड. आया? हाँ चलो. थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो गया था शायद उसलिए मैंने छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन विद दैट. बात समझ में आई? 4 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स कर रहे हैं. तो कौन क्या होगा आप लोग एक बार देख लो. कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है उसके हिसाब से आप कंडीशन लिख लो. और एक प्रॉब्लम कराया था सो विल गेट ए क्लैरिटी स्टिल. मान के चलो 7 ग्राम ऑफ योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 gram of your steam at 100 degrees centigrade are mixed. Find final temperature. Find final temperature of the mixture. ठीक है जल्दी से करके बताओ. Let me see how many of you will give me the answer. Same. Heat lost by one body must be equal to heat gained by another body. So who will be losing the heat? Heat lost by your steam must be equal to your heat gained by ice. Obviously ice will gain the. ये कितना लूज कर रहा है बेटा 1 ग्राम ऑफ आइस. स्टीम कितना 1 ग्राम 1 into 540 प्लस 1 into स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 into ये टेम्परेचर होगा 100 से ये कॉमन टेम्परेचर आएगा T. Heat is gained by 7 gram of ice. So 7 into latent heat of ice is nothing but 80 प्लस ये हो जाएगा 7 grams. 7 grams को फिर जी लिखे तो आप लोग जी समझ लेते तो मैं 7 ही लिखता हूँ. 7 into your 80 plus 7 grams. The specific heat of water is 1 into some common temperature T minus of your 0. तो इसको कर लो कितना आ रहा देखो 540 प्लस ये हो गया 100 माइनस ऑफ योर T इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा देखो जल्दी से. कितना आ रहा बेटा 770 49 7 56. ये हो गया 560 प्लस 7 into T 70 आ जाएगा. तो ये हो गया 540 ये प्लस है तो इधर में आ जाएगा ये दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच फॉर मी माइनस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 70 माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ योर T. ये ब्रैकेट में है ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा बेटा 540 माइनस यानी माइनस 20 आ जाएगा is equals to 70 minus of your 100 plus of your T. यानी ये हो जाएगा 8t minus of your 100. This is minus 20. तो ये कितना आ जाएगा minus 20 minus 100 is equals to your 80. कितना आ रहा देखो बेटा कितना आ रहा बेटा माइनस हाँ ये प्लस आएगा सॉरी माइनस है ना तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा सॉरी. माइनस 20 प्लस 100 कितना होता है बेटा आंसर इज 10. वेरी गुड. माइनस 20 प्लस 100 कितना होता है हायर वैल्यू का जो पॉजिटिव साइन होता है वही लेना है बेटा. तो कितना आ जाएगा 80 दैट इज इक्वल्स टू 8 into T. So T value will be equal to your 80 divided by 8. 8 ones are 8 tens are. So T will be equal to your 10 degree centigrade. आ गई बात समझ में सभी को. वेरी गुड. आ गया बेटा. Is it clear for everyone?
इस पे आज थोड़ा आप लोग निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। कल मैंने आप लोग असाइनमेंट किया था और उसके आंसर्स लिख के भेजने के लिए बोला। जब तक आप लोग आंसर्स लिख के नहीं भेजेंगे मैं उसका की नहीं भेजता। मैं बोल रहा हूँ अभी, मेक श्योर ऑफ दैट वन। आप लोग की के लिए मुझे मत पूछिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोग अपना नाम लिखिए, आप उसका आंसर शीट भेजिए, वरना वैसे ही छोड़ दीजिए कोई असाइनमेंट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय।